Hello everyone. So welcome to our lecture number 17 of our first chapter electric charges and fields. So let's solve the numericals related to your electric flux. So come to your first question. This is suppose question number 1. Okay. So question number 1 is given. A hemisphere is given in the figure. This is that hemisphere. And it is asking that the hemisphere is present in uniform electric field. This is your uniform electric field. Red color line represents uniform electric field lines. The direction of field is from right to left, okay, as shown in the figure, and the radius of this hemisphere is capital R. Okay. So what the question is telling? So find out the flux through the curved surface of a hemisphere. Of radius R, as shown in figure. If it is placed in a uniform electric field E, as in figure. It is placed in a uniform electric field E, as in figure. Okay, so let's solve the question. So what is the formula? We know phi is equal to EA cos theta. Okay, so first come to your basics. So I am पढ़ी flux through a closed surface in uniform electric field is always 0. So first every time लिखिबा, we know through a closed surface in uniform electric field your phi net is 0. Total net flux is equal to 0. Net flux is 0 means what? Net flux is 0 means जेतिक आमर इन फ्लक्स है फ्लक्स इन इज इक्वल्स टू फ्लक्स आउट. फ्लक्स इन इज इक्वल्स टू फ्लक्स आउट. जदि आम पिक्चर को भलसे देखा ऑब्जर्व करवा, जदि आम पिक्चर को भलसे ऑब्जर्व करवा, देख इन दिस पिक्चर आम जो देखा द शेडेड पोर्शन. ओके, लुक एट दिस शेडेड पोर्शन. जी पोर्शन आम शेडेड कले से पोर्शन कौन हो फ्लक्स इन है. आ कर्व्ड सरफेस रे कौन हो फ्लक्स आउट होला. यस, सो फॉर दिस शेडेड पोर्शन the area vector will be this one, area vector, and electric field direction, area vector direction is along positive x axis and electric field direction is along negative x axis. बस. So हमें कही परिबा phi in is how much? Phi in is equals to E A cos 180 degree. So E A cos 180 degree. Cos 180 minus 1, so this will be minus E A. Area कितने? Pi r square. So minus E into pi capital R square. This is your flux in. And एठी भी हमें जान ले कौन. अच्छा, flux in is equal to flux out जो मैं कहली. Phi net रो meaning कौन? एठी बुल लिखले flux in is equal to flux out means magnitude. Magnitude of flux in is equal to flux out. Phi net is equals to 0 means we can say phi in plus phi out is equal to 0. So magnitude wise that value equal होगा. What? Negative positive हमें मन रखिए. इनवर्ट फ्लक्स टा कौन? फ्लक्स इन इज नेगेटिव, फ्लक्स आउट इज पॉजिटिव. सो देखो फ्लक्स इन के बाहर माइनस ई पाई आर स्क्वायर. सो एज पर द कॉन्सेप्ट फाई इन प्लस फाई आउट इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज फ्लक्स आउट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फ्लक्स इन. सो माइनस ऑफ माइनस ई पाई आर स्क्वायर. सो आंसर विल बी ओनली ई इंटू पाई आर स्क्वायर. सो दिस इज द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस. क्लियर? This is the flux of the curved surface of this hemisphere. This is our final answer. Okay. Next come to our second question. Come to question number 2. So question number 2 is given that consider a cylindrical surface of radius capital R.
and the length of the cylinder is and length L in a uniform electric field E. In a uniform electric field E. Okay, so it is asking compute the electric flux if the axis of the cylinder is parallel to the field direction. So as per the question, you have to draw the diagram, and after that you can solve the question. Yes, so let's solve the question. So consider a cylinder. This is our cylinder of length L and radius capital R as per the question. Yes, and electric field is uniform. It is placed in the uniform electric field such that axis of the cylinder is parallel to the field direction. ठीक अछि. This is suppose your uniform electric field direction. These are the uniform electric field lines. Yes, E vector. Okay, so in case रे हम बाहर करिया कोन what is the flux, that means compute the electric flux. That means it is asking about total flux. So केतरा surface देखु हमें. One is your, this is your first surface suppose. Yes, and this is suppose your second surface, another one is curved surface. So the first surface the first surface, then this is second surface, and this one is suppose third surface. अच्छा, flux through first surface केते? Let's flux through first surface is phi 1, second surface flux is phi 2, third surface flux is phi 3. So easily हमें calculate करिए बर्तमान. अच्छा, for first surface what is your area vector? Outdrawn normal. This is your A1 vector, and electric field direction is along positive x-axis, E vector. So flux through the first surface will be phi 1 is equals to E A1 cos theta, that means cos 180 degree. So E area value pi r square, radius is capital R into -1, that is minus into E pi capital R square. Then phi 2 flux through the second surface, area vector outdrawn normal, outward sense रे नबा A2 vector, and electric field vector is along the same direction, E vector. Here angle between them is 0 degree, that will be E A2 into cos 0 degree. Cos 0 is 1, so E A2, area A2 is pi r square, so plus E into pi r square. Then phi 3 flux through curved surface, area vector outdrawn normal, this is your A3 vector, and electric field direction is along positive x direction, E vector, angle between them is 90 degree. So we can write E into A3 cos 90. Cos 90 is 0, so flux is 0. So it is asking about total flux. So total flux will be, so phi net is equals to phi 1 plus phi 2 plus phi 3. So if you will put the respective value, minus E pi r square plus E pi r square plus 0. So final answer will be 0. So previous question they call na, when a closed surface or closed figure is present in uniform electric field, net flux through it is 0. So this is the process. एठी पे हमर बारला net flux is 0. Okay, next come to our question number 3. Question number 3. So it is given that this is a cylinder is present. This is your cylinder, and this cylinder is present. Let's draw the diagram again. Yes, and the height of the cylinder is capital H, and it is given that it is present in uniform electric field shown in figure. This is your uniform electric field. E vector. So what the question is asking actually. So given that a cylinder
of radius capital R and height capital H is placed in uniform electric field. Okay. So question is calculate the flux of the electric field entering the cylinder. So find flux of electric field entering the cylinder. ये गोटे भल क्वेश्चन ताको चलो सॉल्व करवा. लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. देखो ये क्वेश्चन पार्ट जानीगल. नाउ दिस इज द सॉल्यूशन पार्ट. जहाँ भी क्वेश्चन बर्तमान देला से डायग्राम टाक आम अगेन ड्र करा पड़ो. आफ्टर दैट यू कैन अंडरस्टैंड. ओके. सो बर्तमान देख पचार फ्लक्स इन केते हम. यस. सो देख मु कौन कली राडियस देजी कैपिटल आर. यस. एठी मु डायमेट्रिकली कंसीडर कली गोटे प्लेन. आई एम गोइंग टू कंसीडर ए प्लेन लाइक दिस. देखो ये प्लेन टाक मुझे शेडिंग करी बर्तमान शेडेड करी ग्रीन कलर सरफेस. इट इज एक्चुअली 3D फिगर. तो ठीक से इमेजिन करो. सो मुझे कहि लेफ्ट साइड ये लेफ्ट साइड कर्व पार्ट. लेफ्ट साइड कर्व पोर्सन रे जति हमर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटर होबो दैट मीन्स सेति अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये प्लेन टाइम देले इमेजिनरी प्लेन बाय कंसीडरिंग द डायमीटर जो हम इमेजिनरी प्लेन कले ता भीतर भी सेति फ्लक्स एंटर होके जीवो. द सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स विल एंटर थ्रू द ग्रीन कलर पेन. जति अमाउंट ऑफ द नंबर ऑफ फ्लक्स एंटरिंग थ्रू द सिलेंडर फ्रॉम लेफ्ट साइड is equal to the number of flux passing through that green color surface. Yes. So आम कंसीडर करवा एमती ग्रीन कलर सरफेस कंसीडर कले. सो बर्तमान ए ग्रीन कलर सरफेस रे ए लेंथ केते दिस लेंथ इज 2r. दिस इज योर डायमीटर 2r. यस. ए ग्रीन कलर सरफेस रो एरिया वेक्टर दिस इज आउटवर्ड सेंसनली ए वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. दिस इज ए वेक्टर. यस. आम फ्लक्स इन बाहर कर फाइ इन ऑलवेज नेगेटिव. सो फ्लक्स इन केते लिखिबा आम. सो बाहर करबा आम बर्तमान फाइंड करबा फ्लक्स इन. तो आंसर आसो के फाइ इज इक्वल्स टू ई ए cos 180 डिग्री. cos 180 माइनस 1 सो माइनस ई ए. दिस इज द आंसर. सो एरिया केते हम जे गोटे रेक्टांगल देखा जाउची. सो माइनस ई इंटू एरिया ऑफ द रेक्टांगल आसला एल इंटू बी. सो गोटे है तुम 2r एंड बी है तुम h. यस. सो माइनस 2ERH. दिस इज द आंसर. तो नेगेटिव साइन मीन्स द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स flux entering. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स फ्लक्स इज एंटरिंग. फ्लक्स एंटरिंग है नेगेटिव. प्रीवियस लेक्चर में सब कॉन्सेप्ट क्लियर है. इन फ्लाई इन डाला नेगेटिव फाइ आउट इज पॉजिटिव लाइक दिस. चलो आम एमती क्वेश्चन आउ गोटे करवा भी कथाटा बुझेगा. टोटाल सिलिंडर पचार तुम कौन केते फ्लक्स एंटर होंटरिंग थ्रू द सिलिंडर. थ्रू द सिलिंडर जी फ्लक्स एंटर होना ये जो इमेजिनरी प्लेन कंसीडर करवा ये प्लेन भितर भी से फ्लक्स एंटर होला. Okay, by considering that plane we can easily calculate the amount of flux entering. Next come to the question number 4. Question number 4 को जीवा. Question number 4 देखो सही टाइप रा गोटे क्वेश्चन. Question is a cone is present. It is a cone. Yes. And height of the cone कितने दिया? h small h and its radius is capital R. Now it is present in uniform electric field as shown in figure. এটা হলো তোমার uniform electric field. Same thing it is asking. पचरला कोन cone lies in a uniform electric field. क्वेश्चन देला हमको in figure a cone lies in a uniform electric field. Uniform electric field E. So question is determine the electric flux entering the cone. Determine the electric flux entering the cone. Yes, this is our question. So solve करवा देखो से सेम प्रोसेस जी फ्लक्स एंटर हम ताकि केमती कैलकुलेट करा.
देख गोटे सरफेस एमती कनसीडर करी कर्व सरफेस देला ना गोटे रेगुलर सरफेस कनसीडर करवा नाउ सी दिस गोटे रेगुलर सरफेस दे गोटे कनसीडर कली केमती देखा गोटे सरफेसटा इट सीम्स टू बी ए ट्रायंगल गोटे ट्रायंगल शेप देखा तुम ये शेडेड पोर्सन कौन देखा गोटे ट्रायंगल पोर्सन कोन रही मिडिल पार्ट को गोटे कौन प्लेन कनसीडर करवा गोटे ट्रायंगल देखा तमाने मुझे कहना चाहूँगी कोनटा को गोटे आम केमती कट करवा वर्टिकाली कट करदे वर्टिकाली कट करदेला कौन देखा वर्टिकाली कट कला माने कटिंग पर तार इनर पोर्सन गोटे ट्रायंगल देखागला बास जी फ्लक्स एंटर कर कर्व सरफेस रे पोर्सन रे से फ्लक्स आम ट्रायंगल भितर भी एंटर कर दैट्स द कॉन्सेप्ट एति गला ता कॉन्सेप्ट ताले फ्लक्स एंटर पचार तो एरिया वेक्टर केते हो आउटवर्ड सेंस है दिस इज योर एरिया वेक्टर ए वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस यस सो फाई इन is equals to E A cos 180 degree cos 180 minus 1 so minus EA so EA means what minus E uniform electric field strength is E and A means area of this triangle area of the triangle केते हो half into base into height so तार base केते देखो ठीक से ए वैल्यू डाला 2r and height is h so 2r into h so half into base into height this is the answer so 2 cancel हो गला परे माइनस ई आर एच क्लियर सो नेगेटिव साइन कौन सब गला तुमको नेगेटिव साइन मीन्स फ्लक्स इज एंटरिंग फ्लक्स एंटर डाला नेगेटिव से गला कथा क्लियर आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू यस देन आम क्वेश्चन करवा नेक्स्ट आ गए क्वेश्चन नंबर 5 करवा नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 रे हमको तीनटा बिट देला सपोज क्वेश्चन नंबर 5 देखो बिट ए सब हेमिस्फीयर दी जाइए इन इच क्वेश्चन आम गोटे हेमिस्फीयर प्रेजेंट अच्छी देखो मैं डायग्राम ड्रॉ कर दिए yes this is that hemisphere and the radius is this radius is capital R this radius is capital R so first case रे देला कौन देखो फर्स्ट केस हमको देला दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ई वेक्टर यस सेकेंड बिट क्वेश्चन कौन देला सही सेम हेमिस्फीयर एंड रेडियस गिवन इज आर बट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज लाइक दिस जेमती फिगर शो करा ना से टाइप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इच केस कौन बाहर कर अच्छी फ्लक्स थ्रो कर्व सरफेस केते केस बाहर कर अच्छी फ्लक्स थ्रो कर्व सरफेस इज हाउ मच क्लियर देख देन थर्ड बिट ओके एंड हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइंग ए डायरेक्शन तो तीनटा फिगर आमर कौन अच्छी हेमिस्फीयर इज गिवन बट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सब डिफरेंट अच्छी ये पाठ भितर सो क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड फ्लक्स थ्रो क्वेश्चन इज फाइंड फ्लक्स थ्रो कर्व सरफेस इन ईच केस कर्व सरफेस इन ईच केस यस सो फर्स्ट बिट आंसर आम करवा दिस इज फर्स्ट बिट सो मोर फर्स्ट बिट क्वेश्चन तला देखो फर्स्ट बिट को हम भल से ऑब्जर्व करवा तो तार कर्व सरफेस रे पचार फ्लक्स केते तो जी फ्लक्स देखो ये कर्व सरफेस रे इन हो ना से फ्लक्स कौन हो आउट हो ओके थ्रो द कर्व सरफेस इन फ्लक्स आम कौन हो इन हो पोर्सन आम इन है ये पोर्सन आम आउट है राइट साइड पोर्सन आउट है सो नेट फ्लक्स केते हम जी इन है से आउट है ओके सो नेट flux through the curved surface so phi through the curved surface that is 0 net flux is 0 yes second bit bit b रे गोटे इंटरेस्टिंग जिनस अच्छी देखो बिट बी को यदि भल से ऑब्जर्व करवा बिट बी पाक आस एठी हमर को सरफेस दे फ्लक्स इन है आमर जो लोअर सरफेस रहा देख शेडिंग करके देखेबी
बस ये ग्रीन कलर शेडेड पोर्सन आम फ्लक्स इन है एंड कर्व सरफेस कौन है आउट है दैट मीन्स मुझे कहीपरि तुमको ये इंडिकेट करी हियर फाइ इन एंड कर्व सरफेस बाहर फाइ आउट। सो बर्तमान आम जाने गोटे क्लोज्ड फिगर जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहा आमर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गोटे क्लोज्ड फिगर रहा तो आम कौन कहीपर नेट फ्लक्स थ्रो इट इज जीरो। सो फाइ नेट इज इक्वल्स टू इन दिस केस आम कहीपर सेकेंड बिट फाइ नेट इज इक्वल्स टू फाइ इन प्लस फाइ आउट इज इक्वल टू जीरो बस। सो फाइ आउट आमको पचार क्वेश्चन सो फाइ आउट विल बी माइनस ऑफ फाइ इन। सो फाइ आउट दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ फाइ इन। सो माइनस ऑफ फाइ इन केते सो फाइ इन ताको इजिली आम कैलकुलेट कर परिबा केमति देखो यार एरिया वेक्टर कौन हम आउटर नॉर्मल बस एरिया वेक्टर यस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रहा आमर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन रे तो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एंगल बिटवीन देम इज व्हाट 180 डिग्री। सो आम पुट करिबा बर्तमान सो माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ आम लिखि परिबा फाइ इन रो वैल्यू माइनस ऑफ फाइ इन वैल्यू केते ई ए cos 180 cos 180 is minus 1 so minus of EA minus of minus EA that is plus EA and area is how much pi r square so answer amar asla kete E into pi capital R square bas so this is our answer for second bit answer eti through the curved surface phi out means what this is your phi through the curved surface phi out means phi through curved surface I hope it is clear to all of you yes next come to our बिट सी अच्छा बिट सी को जब आम आसवा बर्तमान थर्ड बिट को आसवा देख थर्ड बिट में गोटे इंटरेस्टिंग जिन आम पाइबा बिट सी एटा दिस इज बिट बी यस एटी आम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना देख सो आम कौन बाहर करवा ये थ्रो द कर्व सरफेस पचार आमको आंसर सो मुझे गोटे छोट एरिया ये कनसीडर कली स्मॉल एरिया यस तार एरिया वेक्टर केते हम दिस इज योर डी ए वेक्टर एंड दिस इज योर ई वेक्टर यस सो ये आम कौन बाहर स्मॉल फ्लक्स बाहर सो फाइ थ्रो द कर्व सरफेस आम लिखिपर फाइ थ्रो कर्व सरफेस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइ स्मॉल फ्लक्स रो वैल्यू बाहर करवा देन तक इंटीग्रेट कर दियो थ्रो द कर्व सरफेस छोट छोट आम एरिया नवा छोटिया छोट सब स्मॉल एलिमेंटरी एरिया सब कनसीडर कले यस सो जी फ्लक्स आम कैलकुलेट करवा सब द फ्लक्स को ऐड करदेला मैंने कौन फाइ जे स्केलर क्वांटिटी सो बाहर कर मैंने टोटल फ्लक्स हम कैलकुलेट करवा सो फाइ थ्रो द कर्व सरफेस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइ सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइ बर्तमान देखो सो डी फाइ इज इक्वल टू ई डी ए कॉस जीरो सो इंटीग्रेशन नवा ई एंड डी ए बोथ आर इन सेम डायरेक्शन सो ई डी ए कॉस जीरो इज 1 टेक इट आउटसाइड देन इंटीग्रेशन ऑफ डी ए ये छोट छोट सब एरिया मिसेद मैंने कौन बाहर कर सब स्मॉल एरिया मिसेद जदि that will give us the curved surface area of hemisphere yes बस तार आंसर केते surface area of sphere केते 4 pi r square so hemisphere केते हो 4 pi r square by 2 that is 2 pi r square yes so E into 2 pi r square so the value केते ला हमरो फाइनल आंसर हला 2 E pi r square 2 E pi r square is our answer this is the flux through the curved surface तीनटा क्वेश्चन देखो सेम फिगर बट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ही डिफरेंस सब थे यस से कॉन्सेप्ट ही दरकार तो इस केस में बाहर फ्लक्स ओके नेक्स्ट कम टू अवर क्वेश्चन नंबर 6 ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है यस देन कम टू क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 कौन कला गिवन गोटे cube is given देला हमको one cube is given in the question the cube अच्छी बस this is your cube and cube is present in electric field देखो सब कौन तुमको गिवन दिया है बर्तमान रिप्रेजेंट करुँची now see it properly this is the figure and given that this point coordinate is हम axis केम देला देखो x axis y axis and z axis yes that is important this is your x axis and this is your y axis this one is z axis yes and
तुमको ए पॉइंट रो कोऑर्डिनेट है तुमको a, 0, 0. Yes, and each side of the cube is a. It is mentioned in the question. Side of the cube is a. Each side is a. I hope it is clear. Yes. Then this is the origin. Origin coordinate is 0, 0, 0. Yes. Let's start to solve this question. So question कौन दे जाएगा देखो, then solve करिए. Each side of the cube is a. Yes. Then given that EY is equals to EZ is equals to 0 and EX is equals to alpha root x. Alpha root x. Question is find net flux through the cube. Net flux through cube, and also calculate net charge inside the cube. Also calculate net charge inside of cube. This is our question. ठीक है. E, Y and Ez is 0. That means electric field is acting along x axis only. Along y axis, along z axis, electric field is value नहीं. That means electric field is present in along x axis. So आम ये क्वेश्चन रे बर्तमान जो कैलकुलेट करियो जुबा देखो. अगेन हमको डायग्राम टा उठके फोकस करियो पड़ियो. Yes, let's see the diagram. Yes. So जतले हमर electric field only present अछि along x axis. जतले total flux पचलला only out of 6 phases जोटा मु ब्लू कलर गोटे शेडिंग कर बर्तमान. इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन अच्छे along x axis. So along x axis मीन से ब्लू कलर रे हमरो इन हबो एंड एग्जिट कोडी हबो. एग्जिट हबो हमरो रेड कलर सरफेस रे एग्जिट हैला. फ्लक्स हमरो आउट हबो कोथरे रेड कलर सरफेस. रिमेनिंग 4 सरफेस रे कोन हबो. रिमेनिंग 4 फेसेस रे फ्लक्स 0 बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ तासो टेंजेंशियली पड़ेले. सो ब्लू कलर रे इन हैला आ रेड कलर रे आउट हैला. सो फाई इन एंड फाई आउट बाहर करबा कि फाई लेफ्ट फाई राइट एमती बाहर करबा किछ असुविधा नै. सो एटा ला फाई लेफ्ट तारे एरिया वेक्टर आउटर नॉर्मल. एटा गोटे पार्ट ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस. एटा गोटे कोन हला ब्लू कलर सरफेस इज ए पार्ट ऑफ क्लोज्ड फिगर. तार एरिया वेक्टर केन देबो आउटर नॉर्मल आउटवर्ड सेंस. सो दिस इज योर एरिया वेक्टर ए वेक्टर. क्लियर. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग along पॉजिटिव एक्स एक्सिस. दिस इज योर ई वेक्टर. सो बर्तमान हम जदि कैलकुलेट करिबा कोन फाई लेफ्ट. This is your answer part. Phi left. Phi left कितने? Phi left is EA cos theta. That means cos 180. That means minus EA. ये हम फोकस करिया पड़ियो. देखो ठीक से. E value is given alpha root x. Alpha root x means x is the position of that faces or position of that face from the origin. अच्छा तो बर्तमान ब्लू कलर फेसटा देखा. ब्लू कलर फेसटा ओरिजिन टू केते डिस्टेंस रहा. ओरिजिन टू ये आमर ए डिस्टेंस रोचे. ओरिजिन टू ए डिस्टेंस रहा. यस. सो आम पकड़ा बर्तमान भैल्यू केते माइनस ई भैल्यू है आल्फा इंटू रूट ए. क्लियर. इंटू एरिया भैल्यू. एरिया ऑफ द ब्लू कलर फेसेस केते. ब्लू कलर फेस एरिया एटा गोटे क्यूब रो इच फेस गोटे स्क्वायर. दैट मीन्स ए स्क्वायर. बस तुम आंसर केते आसला बर्तमान. सो माइनस अल्फा ए टू दी पावर 1/2 प्लस 2. यस. रूट ए मीन्स ए टू दी पावर 1/2. सो इट विल बी माइनस अल्फा ए टू दी पावर 5/2. दिस इज योर फाई लेफ्ट. सो व्हाट इज फाई राइट. फाई राइट बुझा. फाई राइट एरिया वेक्टर आउटर नॉर्मल. एटा एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज along positive x axis. This is your EX vector. Clear. They are in same direction. So phi right will be EA cos 0. Cos 0 is 1. So that is EA. E value alpha into root x. Alpha into root x. What is root x? X is the location of that face from the origin. So origin to second face. That means right face or red color face or distance kete 2a. This distance is 2a. A to the a. This is also a. So a plus a, that is 2a. So alpha into root 2a into area value a square.
एरिया वैल्यू इज ए स्क्वायर सो इट विल बी आमर आंसर आसला के √2 अल्फा ए टू दी पावर 5/2 √a into a square a to the power 5/2 so now we can easily calculate phi total is phi left plus phi right phi total is phi left or phi right so our answer asla minus alpha a to the power 5/2 plus √2 alpha a to the power 5/2 so common amar gala kete alpha a to the power 5/2 take it as common then √2 minus 1 this is your net flux this is your phi net as per the question our gote bit answer bahari gala find the net flux through the cube this is our net flux through the cube I hope it is clear acha then second bit agon pacharchi dekho second bit is asking about second bit net charge inside the cube we know total flux is equals to q enclosed divided by epsilon naught yes that is equals to instead of phi net we can write q in by epsilon naught this is equal to phi alpha a to the power 5/2 into √2 minus 1 so we can find q inside is equals to alpha epsilon naught a to the power 5/2 into √2 minus 1 this is your charge inside the cube as per the given question I hope question number 6 is clear to all of you yes it is a very important question actually our inside boy be question available ଅଛି but alpha value रे given देती okay alpha value is given तो से value put करी कर परिबा yes the process remains same next time जिबा question number 7 cube concept रो question करिया वर्तमान question number 7 yes so question is find flux through the cube and each face of cube question is find flux through the cube and each face of cube in flux through each face of cube so question कौन दला देखो हम फिगर रे ओनली किसी डाटा गिवन नहीं yes this is a cube बस it is mentioned that गोटे क्यूब गिवन अच्छी yes बर्तमान फिगर को देख क्वेश्चन कहूँ ए चार्ज इज प्रेजेंट ए चार्ज क्यू इज प्रेजेंट एट द सेंटर yes सेंटर रे गोटे चार्ज क्यूब अच्छी ताले टोटाल फ्लक्स केते हम अच्छा बर्तमान देख आम जाने कौन फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय इप्सिलॉन नॉट आंसर करवा आंसर इज वी नो यदि आम आंसर बर्तमान करवा देख वी नो टोटाल फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू फाई थ्रू द क्यूब दैट इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइड बाय इप्सिलॉन नॉट सो क्यूब भितर आमर टोटाल केते चार्ज इनक्लूड अछि क्यूब सो क्यू इनसाइड है आमर आंसर क्यू सो फाइनल आंसर हम लिखा क्यू डिवाइड बाय इप्सिलॉन नॉट ए बहुत सिंपल केसटा आम डिफरेंट केस बर्तमान सॉल्व करवा आमर फ्लक्स फॉर्मूला कौन फ्लक्स थ्रू क्यू इज इक्वल्स टू और फ्लक्स थ्रू द सिस्टम जहाँ भी क्यू इनसाइड डिवाइड बाय इप्सिलॉन नॉट सो क्यू इनसाइड मीन्स क्यू केते इनक्लोज होइक सिस्टम भितर सो टोटाल केते चार्ज इनक्लोज होइक क्यू चार्ज सो क्यू डिवाइड बाय इप्सिलॉन नॉट दिस इज द आंसर अच्छा आम क्यूब रो मीनिंग कौन क्यूब कहबार मीनिंग है 6 फेसेस सो फाई थ्रू द क्यूब मीन्स फाई थ्रू 6 फेसेस केते हैला क्यू डिवाइड बाय इप्सिलॉन नॉट सो हम जदि पचारिबा फाई थ्रू 1 फेस केते हबो फाई थ्रू 1 फेस और फ्लक्स थ्रू ईच फेस क्यू डिवाइड बाय 6 इप्सिलॉन नॉट दिस इज योर आंसर क्यू डिवाइड बाय 6 इप्सिलॉन नॉट सो फ्लक्स थ्रू ईच फेस बाहरला फ्लक्स थ्रू द क्यूब बाहरी गला यस दिस इज द आंसर आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू वेरी गुड नेक्स्ट टाइम जी क्वेश्चन नंबर 8 कम टू क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा बर्तमान क्वेश्चन नंबर 8 रे सिचुएशन टी चेंज कला कौन चेंज कला बर्तमान कहला क्यूब चार्ज गोटे कॉर्नर रे अच्छी गोटे कॉर्नर एनी कॉर्नर रे बर्तमान चार्ज क्यूब अच्छी सो सेम थिंग फाइंड फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड ईच फेस ऑफ द क्यूब केते हम बर्तमान देखो चार्ज क्यू ये एनक्लोज ना चार्ज क्यू तो सेंटर रे थिला इनसाइड क्यू थिला सो क्यू इनसाइड इक्वल टू क्यू लिखिदेवा बर्तमान चार्ज कौन अच्छी द गिवन चार्ज इज प्रेजेंट एट एनी कॉर्नर सो बर्तमान आम एनक्लोज करवा सो मुझे बर्तमान क्यूबटा को तार 3D फिगर आम 2D रे केमती बुझा देख सो मुझे कौन कली क्यू एनक्लोज करी सो मुझे
टॉप व्यू देखिए टॉप व्यू तो ऊपर आम देखा टॉप व्यू सपोज एटा है क्यूब ताले चार्ज कौटे अच्छी चार्जटा सेंटर सॉरी गोटे कर्नर अच्छी ओके ताको आम एनक्लोज केमती करवा देख सो मु बर्तमान या एनक्लोज करने मुझे आडिशनाल किसी क्यूब्र हेल्प नेबी केमती देख ता साइड में आउ गोटे क्यूब रखिली फिर भी आमर कौन चार्ज क्यूटा एनक्लोज है ना बर्तमान ये आउ गोटे क्यूब रखिले 3 नंबर क्यूब रहा तथापि चार्ज एपटू देखा येस गोटे कर्नर बर्तमान 4 नंबर क्यूब आम रखिले फिर भी ये केस कौन अच्छी चार्ज क्यू इज नॉट एनक्लोज बर्तमान ये 4टा क्यूब जदि आम रखा बर्तमान आम टॉप व्यू देखा कर्नर रे चार्ज अच्छी क्यूब तथापि आमको देखा आमको कौन करार अच्छे आवर एम इज टू एनक्लोज द चार्ज क्यूब एनक्लोज माने लुचेई देवा सो दैट लगे कौन क्यूब चार्जटा तुमको देखा जो रेड कलर चार्ज अच्छी देखिपारे ना कि बर्तमान आम कौन कले गोटे क्यूब एमती मुझे दिस इज 1 क्यूब है ये आम चार्ज रहा क्यूब अच्छा ता पाखे मुझे आउ गोटे क्यूब रखिली ये मुझे कनसीडर करी आउ गोटे क्यूब रखा मनकर यहाँ है ओरिजिनल फिगर देन ता पाखे आउ गोटे क्यूब रखी ये सैड्रे ठीक बुझिपार बस जदि आम एमती कम करवा ना ये जो एमती क्यूब आम कनसीडर करवा फिर भी आमर कौन हो चार्ज क्यूटा एनक्लोज हो ना ये जो रेड कलर मुझे ड्र कली ये पछक ये व्हाइट कलर क्यूब्र बैक साइड्रे आउ गोटे क्यूब अच्छे मनकर या साइड्रे आउ गोटे क्यूब अच्छे तथापि आमको चार्ज क्यूटा कौन अच्छे एनक्लोज ना पुणी ता ऊपर जब आम 4टा क्यूब रखा तापर जाकि से कौन एनक्लोज हम कहर मीनिंग ठीक से बुझ बर्तमान चार्ज क्यूटा कौटे अच्छी गोटे कर्नर रे अच्छी सो इच कर्नर जेको गोटे कर्नर रहा चार्ज क्यूब येस आम आमर एम है चार्ज क्यूब को एनक्लोज सिस्टम को आने एनक्लोज फॉर्मेट तो मुझे 4टा क्यूब कनसीडर कली फिर भी सी एनक्लोज है ना बर्तमान कौन कली मु नेक्स्ट ये आउ गोटे क्यूब रखिली ये मुझे 5 नंबर क्यूब रखी क्यूब रखला माने ही तुमको एपट साइड देख फ्रॉम दिस साइड आम चार्ज क्यूब रेड कलर चार्जटा को देखिपर एगेन आउ गोटे क्यूब कनसीडर कली येस तापर आउ गोटे क्यूब कनसीडर करी बास 8टा क्यूब कनसीडर कला माने बर्तमान चार्ज क्यूटा कौन हो देखा जो गोटे चार्जटा कर्नर रही आमर एम ताकू लुचेगा सपोज मुझे कहली सपोज देख एग्जांपल आम ये क्वेश्चन भी बर्तमान सल्व करवा यहाँ सिंपल केसटा आगे देख तार गोटे फेस सेंटर रहा चार्ज क्यूब गोटे फेस सेंटर रहा यहीटा को आम एनक्लोज करा कौन करा पड़ो गोटे फेस सेंटर अच्छी मैंने एनक्लोज करा तो गोटे साइड देखले देखा ना एपट साइड जो ऑब्जर्व कर जेकोसी ऑब्जर्वर देखिपर चार्ज क्यूटा दैट मीन से एनक्लोज नुह ताकू लुचेगा है माने आमको ये पाखे आउ गोटे क्यूबटे कनसीडर करा पड़ो अदर गोटे क्यूबटे एमती कनसीडर करने आमको निहाती दरकार सो दैट कौन हो देखा ना ऑब्जर्वर जेकोसी साइड देखो ओके फ्रॉम एवरी डायरेक्शन से ऑब्जर्व कर ना चार्ज क्यूटा कौन होगा बर्तमान लुचिगला देखागलानी बट यही जो फिगरटा बर्तमान अच्छी गोटे साइड क्यू अच्छी मीन्स गोटे साइड चार्ज क्यू अच्छी मीन्स तुमको देखा दैट मीन्स एनक्लोज नुह ता साइड जब आउ गोटे क्यू आनी प्लेस करदेवी ना बर्तमान कौन है एनक्लोज होगा लुचिगला देखा एक्जाक्टली जो सेंटर रे अच्छी किसी दरकार नहीं गोटे क्यूर सेंटर रहा ऑलरेडी एनक्लोज्ड येस जदि गोटे सरफेस इच फेस जेकोसी गोटे फेस सेंटर रहा आमको केतटा क्यूब दरकार आडिशनल आउ गोटे क्यूब हम सो दैट 2टा क्यूब भितर से लुचिगला जना पड़ोनी बर्तमान आम जो क्वेश्चन अच्छे बर्तमान से गोटे कर्नर अच्छी कर्नर रहा मैंने केतटा क्यूब दरकार 8टा क्यूब दरकार तो आम जानी आम कौन फ्लक्स सिस्टम फाई थ्रो द सिस्टम के क्यू डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट ये सिस्टम कहर मीनिंग कौन सिस्टम मीन्स 8 क्यूब्स सो फाई थ्रो 8 क्यूब्स इज इक्वल्स टू क्यू बाय इप्सिलॉन नॉट सो फाई थ्रो 1 क्यूब केते हम गोटे क्यूब केते हला क्यू बाय 8 इप्सिलॉन नॉट दिस इज द फ्लक्स थ्रो 1 क्यूब आम आंसर पाइले बर्तमान पचारा इच फेस रे केते हम अच्छा बर्तमान चार्ज क्यूर लोकेशन जो देखुच ना नहीं चार्ज क्यूटा को लोकेशन अच्छी यही लोकेशन जो चार्ज क्यूब बर्तमान तुम प्रेजेंट अच्छी आमर इच क्यूब रे केतटा फेस रहा 6 फेसेस बर्तमान देख तो 6 फेसेस भितर जो फेसटा बर्तमान यही ऊपर फेसटार इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टैंजेंशियल होसी गला देख देन एपट फेस रे 3टा फेस मुझे देखा गोटे है टॉप फेस आ गोटे है बैक साइड फेसटा है मोर ग्रीन कलर शो कली बैक फेसेस अच्छा आ गोटे फेस भी मुझे ड्र करुँचा किए राइट साइड फेस है ये राइट साइड फेस बस
ए तीनटा फेस रे से बर्तमान केमती जीव टैंजेंशियल एमती पड़ेगा टैंजेंशियल बर्तमान से कौन कला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास कला तो टैंजेंशियल पास कला तो सेटा फ्लक्स रे काउंट होबनी तो मैंने आउट ऑफ 6 1 क्यूब रो मीनिंग है तुम कौन 1 क्यूब इट मीन्स 5 थ्रो 1 क्यूब रो मीनिंग है 5 थ्रो 6 फेसेस केते आसला q बाई 8 इप्सिलॉन नॉट ए 6 फेसेस रु तीनटा फेस रे फ्लक्स केते हला 5 थ्रो 3 फेसेस 0 एंड 5 थ्रो रिमेनिंग 3 फेसेस दैट इज इक्वल टू q बाई 8 इप्सिलॉन नॉट कथाटा बुझो बिकॉज फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी 6टा फेस 1 क्यूब कहवा मीन 6 फेसेस सो फ्लक्स थ्रो 1 क्यूब है q बाई 8 इप्सिलॉन नॉट दैट मीन्स 5 थ्रो 6 फेसेस q बाई 8 इप्सिलॉन नॉट दैट इज टोटल फ्लक्स थ्रो द 6 फेसेस केते q बाई 8 इप्सिलॉन नॉट 6 फेसेस रु 3टा फेस रे फ्लक्स 0 दैट मीन्स q बाई 8 इप्सिलॉन नॉट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर 3 फेसेस ओनली सो फ्लक्स थ्रो 3 फेसेस है q बाई 8 इप्सिलॉन नॉट ताले फ्लक्स थ्रो 1 फेस केते होबो q बाई 8 इप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 3 दैट इज q बाई 24 इप्सिलॉन नॉट दिस इज द आंसर सो ईच क्यूब फ्लक्स थ्रो द क्यूब जतले सेंटर रे रहितला आंसर हला q बाई इप्सिलॉन नॉट गोटे क्यूब रो सेंटर रे रहले किंतु जो कॉर्नर रे रहिगला तुम आंसर हला फ्लक्स थ्रो 1 क्यूब q बाई 8 इप्सिलॉन नॉट सो एंड ईच फेस रे केते हला 6 फेसेस रु 3टा फेस रे 0 रिमेनिंग 3टा फेस पय हला तुम q बाई 8 इप्सिलॉन नॉट सो फ्लक्स थ्रो 1 फेस दैट इज आवर q बाई 24 इप्सिलॉन नॉट है ताको अक्वेंटेड हो जावा दरकार देन क्वेश्चन नंबर 9 को आस क्वेश्चन नंबर 9 जोटा आम कनसीडर करथिले बर्तमान केसटा ताको सॉल्व करबा देखो क्वेश्चन नंबर 9 कोन कहला क्वेश्चन नंबर 9 कहला पोजीशन ऑफ q टा हम चेंज हो गला केमती q बर्तमान एठी रहला चार्ज q इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी फेस बस सो याकू जदि हम एनक्लोज करबा जिबा केमती करबा q टा डी एनक्लोज नाही हम तुम कहली ताको जदि हम राइट साइड रो देखिबा ताल से देखा जीवो तो याकू एनक्लोज करने आमको आ गोटे क्यूब कनसीडर करा पड़ो देख आ गोटे क्यूब मुझे कनसीडर कली सो दैट ताको बर्तमान जो साइड तुम देख चार्ज क्यूटा तुमको देखा ना चार्ज क्यू आ भिजिबल नुह से लुचिगला बर्तमान क्यू है तुम क्यू इज एनक्लोज ना सो बर्तमान आम देखा जिते आम गोटे फेस सेंटर अच्छी ताले फ्लक्स थ्रो सिस्टम आम जाने 5 थ्रो सिस्टम इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाई इप्सिलॉन नॉट ये सिस्टम रो मीनिंग कौन ये सिस्टम है 5 थ्रो 2 क्यूब्स दुईटा क्यूब रे हमर केते हला क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट ताले फ्लक्स थ्रो 1 क्यूब केते हो फ्लक्स थ्रो 1 क्यूब विल बी क्यू बाई 2 इप्सिलॉन नॉट क्यू बाई 2 इप्सिलॉन नॉट दिस इज योर आंसर सो बर्तमान ईच फेस कथा हम चिंता करिया ईच फेस पई कोन हबो बर्तमान क्यूटा जोटे अच्छी देख चिंता कर आउट ऑफ 6 फेसेस 6टा फेस रु को फेस रे फ्लक्स तुम जीवो देख ये 6टा फेस रु जो फेस रे बर्तमान क्यूब अच्छी ना ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्सटा ताको टैंजेंशियल सब जीवो सो आउट ऑफ 6 फेसेस फ्लक्स थ्रो 1 क्यूब ता माने कोन फ्लक्स थ्रो 1 क्यूब रो मीनिंग है फ्लक्स थ्रो 6 फेसेस दैट इज इक्वल्स टू क्यू बाई 2 इप्सिलॉन नॉट सो 6 फेसेस रु बर्तमान गोटे फेस रे कोन हला फ्लक्स किसी ना टैंजेंशियल पड़ेगा रिमेनिंग 5 फेसेस रे तुम फ्लक्स जीव सो आउट ऑफ 6 फेसेस फ्लक्स थ्रो 1 फेस के दैट इज 0 दैट मीन्स आम जो 6 फेसेस क्यू बाई 2 इप्सिलॉन नॉट हाँ दैट मीन्स 5 फेसेस के क्यू बाई 2 इप्सिलॉन नॉट फ्लक्स थ्रो 5 फेसेस क्यू बाई 2 इप्सिलॉन नॉट सो फ्लक्स थ्रो 1 फेस के क्यू बाई 10 इप्सिलॉन नॉट आई होप इट इज क्लियर गोटे क्यूब रे फ्लक्स है के क्यू बाई 2 इप्सिलॉन नॉट क्यूब रो मीनिंग 6 फेसेस तो मैंने टोटाल फ्लक्स थ्रो 6 फेसेस हम यदि कैलकुलेट करबा दैट इज क्यू बाई 2 इप्सिलॉन नॉट किन बट 6 फेसेस रु बट बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ द चार्ज क्यूब गोटे फेस रे तुम फ्लक्स के 0 तो मैंने रिमेनिंग 5 फेसेस ही फ्लक्स रेस्पॉन्सिबल सो जोटा आम क्यू बाई 2 इप्सिलॉन नॉट बाहर दैट इज फॉर 5 फेसेस सो फ्लक्स थ्रो 1 फेस है क्यू बाई 10 इप्सिलॉन नॉट डिवाइड हो गला बाई 5 यस आई होप इट इज क्लियर बर्तमान तुम चार्ज लोकेशन डिफरेंट लोकेशन रे थिले सेम तुम कैलकुलेशन करिवो यस ओके तो बर्तमान क्वेश्चन नंबर 10 करवा क्वेश्चन नंबर 10 देख आ गोटे लोकेशन बर्तमान चार्ज रहा क्वेश्चन नंबर 10 बर्तमान कौ लोकेशन चार्ज अच्छी नाउ सी दिस थिंग नाउ ईच साइड जेकोसी गोटे साइड सेंटर अच्छी सपोज जेकोसी गोटे साइड सेंटर अच्छी यस ये रहा चार्ज क्यू
येस तेना मुझे डायग्राम रे देखेबी डायग्राम करवा एटा ला क्यूब टॉप व्यू देखा टॉप व्यू बर्तमान ताको ऑब्जर्व करवा टॉप व्यू बर्तमान कौन अच्छी इच साइड अच्छी गोटे ये चार्ज क्यूटा अच्छी जेकोसी गोटे सैड्रे अच्छी है टॉप व्यू कौन देखा गोटे स्क्वायर देखा ना क्यूटा बास बर्तमान चार्जटा लुचि लगी तुम चार्जटा एनक्लोज है ना एनक्लोज कराया तुमको एडिशनल क्यूब्र हेल्प दरकार देख केतटा क्यूब है चार्जटा लुचिब देख सहीटा है क्वेश्चन बर्तमान ता पाखे आगे आउ गोटे क्यूब रखिली फिर भी चार्जटा देखा केमी देखा टॉप रू देखा जाऊँगी येस बर्तमान कौन करवा या आउ गोटे क्यूब रखिदेवा येस तथापि चार्ज एनक्लोज है फ्रॉम दिस साइड जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर देखा चार्ज एनक्लोज है एगेन आउ गोटे क्यूब रखिदेवा या येस तमाने जो गोटे साइड कथा पड़ा साइड्र सेंटर रहा चार्ज क्यूब तो केतटा क्यूब दरकार एनक्लोज करने चारिटा क्यूब दरकार चारिटा क्यूब दरकार ताको एनक्लोज करने से क्वेश्चन बर्तमान से ही कौच ताले फ्लक्स थ्रू द सिस्टम कौन फाई थ्रू द सिस्टम आम जाचे क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट योर सिस्टम मीन्स 4 क्यूब्स सो फाई थ्रो 4 क्यूब्स आम लिखा फाई थ्रो 4 क्यूब्स इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट बिकज चारिटा क्यूब हेले ही क्यूटा कौन है तुम चार्टा क्यूब आने जदि चार्ज क्यू तुम एनक्लोज हम गोटे क्यू चार्ज एनक्लोज क्यू नाला बर्तमान जो फिगर देती फिगर ये तुम क्यू चार्जटा कौन अच्छे एनक्लोज चार्ज ना ताकू देखिपुर आम डिफरेन्ट एंगल ताकू लुचेवा पड़ो आमको हाइड करा पड़ो ओके टू हाइड द चार्ज क्यूब आमको केतटा क्यूब्र हेल्प दरकार 4 क्यूब्स हेल्प दरकार फाई थ्रो 4 क्यूब्स है क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट ताले फाई थ्रो 1 क्यूब के फाई थ्रो 1 क्यूब हम आमर क्यू बाई 4 इप्सिलॉन नॉट दिस इज द आंसर क्यू बाई 4 इप्सिलॉन नॉट क्लियर आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू देख ये आक्वेंटेड होमें एमती टाइप क्वेश्चन सपोज क्वेश्चन नंबर 11 कौन देला क्वेश्चन नंबर 11 देला एटा गोटे हेमिस्फीयर लेट अस कंसीडर दिस इज योर हेमिस्फीयर यस एटा हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर रे एटा तुम चार्ज क्यू सो पचार फ्लक्स के टोटाल फ्लक्स यस केमी जाना बर्तमान सो ये देख ये कौन चार्ज क्यूटा एनक्लोज अच्छी कि ना ताकू जब टॉप रू देखा आम एपटू किए देख गोटे ऑब्जर्वर ताकू देखा बट जो आम तलू किए देखो देख ये गोटे ऑब्जर्वरटा अच्छी ताकू देखा चार्ज क्यूटा ये अच्छी बोली देखा सो बर्तमान चार्ज क्यूटा कौन अच्छी एनक्लोज ना लुचि ना ताकू हाइड करा पड़ो तेना आमको कौन करा पड़ो या हाइड कराने आमको कौन करा पड़ो देख आम गोटे सिस्टम तैयारी करमती सी हाइड होमती हाइड हम देख आमको कौन कली ये आउ गोटे क्यू आउ गोटे सरी आउ गोटे हेमिस्फीयर कनसीडर करदेली केतटा हेमिस्फीयर है 2टा हेमिस्फीयर बास तो फाई थ्रो सिस्टम ये लिखिपर फाई थ्रो सिस्टम यहाँ होल सिस्टम सो फ्लक्स थ्रो द सिस्टम के फाई थ्रो सिस्टम इज क्यू डिवाइड बाई इप्सिलॉन नॉट दैट मीन्स फाई थ्रो 2 हेमिस्फीयर्स इज इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट आमर दरकार के फाई थ्रो 1 हेमिस्फीयर सो फाई थ्रो 1 हेमिस्फीयर इज इक्वल टू क्यू बाई 2 इप्सिलॉन नॉट दिस इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर यस अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को जी क्वेश्चन नंबर 12 दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग पार्ट क्वेश्चन नंबर 12 तुम कौन देला देख तुम गोटे पार्ट देला जस्ट लाइक दिस वन यस एरा गोटे पार्ट देला एंड चार्ज क्यू अच्छी कौटी एठी सो फ्लक्स केते हम देख केमती बाहर करवा ये तो चार्ज क्यूटा कौन एनक्लोज क्यू ना एनक्लोज चार्ज होना बर्तमान आमको कौन करा पड़ो सिस्टम तैयारी करा पड़ो जिन से लुचिज सो मुझे कौन कली या बेस कली गोटे स्पीयर तैयारी कली एमती स्पीयर रे केतटा पोर्सन एमती तुम पाइब 4टा पोर्सन देखिपार बर्तमान कौन है फ्लक्स थ्रू द सिस्टम आम के फाई थ्रू द सिस्टम दैट इज क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट बस सो आमको देती गोटे क्वाड्रेंट पार्ट गोटे 1/4 पार्ट सो सिस्टम मीन्स फाई थ्रो 4 पार्ट्स के क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट आमको केतटा पार्ट देती आउट ऑफ 4 आम गोटे पार्ट रे क्वेश्चन पचार फ्लक्स के सो फाई थ्रो 1 पार्ट विल बी क्यू बाई 4 इप्सिलॉन नॉट दिस इज द आंसर यस ओके सो बर्तमान देख एगेन ये टाइप क्वेश्चन निजको आक्वेंटेड कर बस सपोज मुझे
এটা গোटे सिलिंडर देला यस ये तुम चार्ज रहा क्यू चार्ज बर्तमान एथर जब फ्लक्स पचार फ्लक्स के फ्लक्स तो एनक्लोज होगी अच्छी इजिली सो फाइ इज इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट के इजी देख क्वेश्चन फ्लक्स के बाहर क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट बर्तमान तुम क्वेश्चन नंबर 14 रे कौन पचार देख क्वेश्चन नंबर 14 रे टिके चेंज आसे कौन क्वेश्चन नंबर 14 कहला এটা हाफ ऑफ द सिलिंडर क्वेश्चन नंबर 14 এটা हाफ ऑफ सिलिंडर यस एथर तुम टोटाल फ्लक्स केते हम बर्तमान तुम कौन चार्ज क्यू एनक्लोज नहीं चार्ज क्यू ये एनक्लोज नहीं चार्ज क्यू के एनक्लोज करा गले कौन करा पड़ो देख मत आउ गोटे सिलिंडरटे कनसीडर कली यस बर्तमान यही सिस्टम फॉर दिस होल सिस्टम क्यू चार्ज इज एनक्लोज्ड यस तो आम लिखिपर आंसर रे फाइ थ्रू द सिस्टम इज इक्वल्स टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट सिस्टम मीन्स फाइ थ्रू टू हाफ सिलिंडर्स शॉर्टकट लिखि देछि टू हाफ सिलिंडर्स के क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट तो फाइ थ्रू हाफ सिलिंडर के हम गोटे हाफ सिलिंडर रे आंसर आसो फाइ थ्रू हाफ सिलिंडर द हाफ सिलिंडर विल बी क्यू बाई टू इप्सिलॉन नॉट दिस इज आवर आंसर I hope it is clear. Yes. Okay. So question number 14 finished. Next come to your question number 15. Question number 15 jiba. Question number 15. Yes. 15 question number कौन कहला ये गोटे हेमिस्फीयर गिवन अच्छी देख हेमिस्फीयर इज गिवन एंड तुमको देदेला गिभेन ये तुम चार्ज क्यू अच्छी दिस इज देयर चार्ज क्यू केतरा फेस देखुच सरफेस केतरा देखा दीटा सरफेस देखा आई होप यहाँ गोटे सरफेस आ गोटे कर्व सरफेस क्लियर आ गोटे अनदर वन इज कर्व सरफेस दिस ग्रीन कलर पार्ट इज कर्व सरफेस यस सो ए पिंक कलर सरफेस रू आम फ्लक्स है सपोज फाइ 1 आ कर्व सरफेस रे फ्लक्स है फाइ 2 सपोज फ्लक्स थ्रू द पिंक कलर इज फाइ 1 फ्लक्स थ्रू द ग्रीन कलर इज फाइ 2 क्वेश्चन पचार तुमको फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइ 1 एंड फाइ 2 यस ये तो बहुत इजी होगा तुम बर्तमान देख के इजिली आम सल्व कर बर्तमान चार्ज क्यू कौन अच्छी इलेक्ट्रिसिटी इवेंट ना ये कस्ती आम यूज कर ना यस तुम आंसर को बर्तमान जी आंसर पार्ट पर आसवा बर्तमान चार्ज क्यू कौन एनक्लोज हो अच्छी कि चार्ज क्यू ये एनक्लोज हो ना यहाँ प्रोब्लेम सो आमको कौन करा पड़ो देख मुझे गोटे आ गोटे इमेजिनारी हेमिस्फीयर कनसीडर कली सो दैट जमी चार्ज क्यू कौन है हाइड होगला ताको आउ देखिपर नहीं सो फाइ थ्रू द सिस्टम ये के आसला फाइ थ्रू द सिस्टम के फाइ थ्रू द सिस्टम इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट सिस्टम माने कौन फाइ थ्रू टू हेमिस्फीयर्स दैट इज क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट सो फाइ थ्रू वन हेमिस्फीयर केते क्यू बाई टू इप्सिलॉन नॉट ये जो क्यू बाई टू इप्सिलॉन नॉट फ्लक्स बाहर ये गोटे भल जिनस चेक कर जो आम फिगरटा ये देला कौन देला चार्ज क्यू कौटे अच्छे देख पिंक कलर सरफेस अच्छी यस ताले जो फील्ड लाइन सब बाहर जो सब फील्ड लाइन्स बाहर ये पिंक कलर सरफेस केमती जो टेंजेंशियली चिरिकी गला नहीं टेंजेंशियली गला सो फ्लक्स थ्रू द सरफेस 1 केते हला ताले 0 आउ जिते सब फील्ड लाइन्स बाहर एठू ये जो ग्रीन कलर सरफेस आम रहा ग्रीन कलर कर्व सरफेस ताकू सी किसी ना किसी गोटे क्रॉस करके जाऊँगी सो आम बाहर जो कर फ्लक्स फाइंड करवा ना से टाइम कहार फ्लक्स बाहर फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस आंसर बाहर तो फाइ 2 आंसर के बाहर क्यू बाई 2 इप्सिलॉन नॉट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर है सो फाइ 1 वैल्यू के 0 बिकज जो सरफेस रे अच्छी से सरफेस रू सब फील्ड लाइन्स कौन हो टेंजेंशियली जाऊँ ना जस्ट सो 0 फ्लक्स माने कौन अमाउंट ऑफ इट इज ए मेजर ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग फ्रॉम एरिया परपेंडिकुलरली यस ताने कि बस किसी गोटे एंगल गला मैंने फ्लक्स कैलकुलेट हो ये कस थीटा जहाँ भी बट टेंजेंशियली गला मीन्स हो पार ना जमी भी तुम कर यस
सो फाइव वन इज 0 फाइव टू इज क्यू बाई टू इप्सिलॉन नॉट बर्तमान क्वेश्चन नंबर 16 को आसवा क्वेश्चन नंबर 16 देख मुझे सेम फिगर दूसरी बट टिके चेंज करदेवी क्वेश्चन रे कौन चेंज करी जस्ट सी दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर केते कहली क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 यस बर्तमान तुम फिगर चेंजेस कौन आसला देख चार्ज क्यू रो पोजिशन टा बस चेंज करदेली यस ओके ये तुम रेड कलर फेसेस गोटे सरफेस रहा चार्ज क्यू बट इन दिस क्वेश्चन चार्ज क्यू अच्छी कौटी चार्ज क्यू बस किसी गोटे डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस ऊपर अच्छी फ्रॉम रेड कलर सरफेस यस क्वेश्चन ये तुम पचार फ्लक्स थ्रो फाइव वन के फ्लक्स थ्रो फाइव टू के यहाँ क्वेश्चन ये तुम टेक्निकाली टी साउंड हाँ पड़ो केमती देख ये चार्ज क्यू रू क्यूटा गोटे पॉजिटिव चार्ज देला सो पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइन्स सब बाहर सो दिस इज दीज आर द डायग्राम और दीज आर द फील्ड लाइन्स तो मैंने जना पड़ा जे रेड कलर फेस रे आमर कौन हो फ्लक्स इन हो कर्व सरफेस रे फ्लक्स आउट है वेरी गुड फ्लक्स आउट है कौटी ग्रीन कलर सरफेस रे यस सो क्वेश्चन पचार बर्तमान तुम कौन फाइव वन भैल्यू के एंड फाइव टू भैल्यू के क्लीयर यस केमती सल्व करवा जस्ट थिंक ये गोटे भल जिन देख जी फ्लक्स इन है से फ्लक्स आउट हम तो मैंने फाइव वन प्लस फाइव टू इज 0 सिंपल थिंग आम कि कनक्लूजन न पाइले फाइव वन प्लस फाइव टू इजिली वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू 0 जी फ्लक्स इन है कौटी रेड कलर फेस रे से फ्लक्स आउट हम थ्रू द कर्व सरफेस ग्रीन कलर फेस रू ग्रीन कलर सरफेस रू आउट है सो फाइव वन प्लस फाइव टू के हम 0 इज इट क्लीयर यस सो नाउ बर्तमान देखा के आम जस्ट बाहर करचे एठी क्यूटा एनक्लोज्ड नहीं ना ये चार्ज क्यू कौन अच्छे एनक्लोज्ड ही नहीं तो चार्ज क्यू को एनक्लोज करे कहले आम गोटे इमेजिनरी हेमिस्फीयर देख रखिली बर्तमान फ्लक्स थ्रो द सिस्टम मीन्स फ्लक्स थ्रो द टू हेमिस्फीयर्स सो फ्लक्स थ्रो टू हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट सो फ्लक्स थ्रो वन हेमिस्फीयर दैट इज इक्वल्स टू क्यू बाई टू इप्सिलॉन नॉट ए फ्लक्स थ्रो वन हेमिस्फीयर मीनिंग कौन फ्लक्स थ्रो द सेकेंड सरफेस मीन ग्रीन कलर सरफेस के बाहर क्यू बाई टू इप्सिलॉन नॉट बस फाइव टू बाहरी गला क्यू बाई टू इप्सिलॉन नॉट तो फाइव टू बाहर मीन्स फाइव वन के फाइव वन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फाइव टू दैट इज माइनस ऑफ क्यू बाई टू इप्सिलॉन नॉट दिस इज द आंसर माइनस ऑफ क्यू बाई टू इप्सिलॉन नॉट तुमको बाहर कर अच्छी टोटाल फ्लक्स के दूसरे आम कौन थ्रो द सरफेस वन सरफेस टू सो इजिली आम बाहर कर फाइव टू भैल्यू सिस्टम कैलकुलेट करदे बस एनी हाउ चार्ज क्यू के एनक्लोज करार अच्छी तापर जाके आम कैलकुलेट कर इजिली यस क्वेश्चन नंबर 16 फिनिश्ड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा क्वेश्चन नंबर 17 यस क्वेश्चन नंबर 17 आम कौन देला गिवेन ये गोटे क्यूब अच्छी से क्यूब टाइप क्वेश्चन देला देख दिस क्यूब इज गिवन इन क्वेश्चन तापर कौन पचारा देख ये टाइप न्यूमेरिकल आम कर जस्ट खाली डाटा चेंज हो यस एंड इन द फिगर दिस इज योर y axis this one is x axis and this one is z axis clear z x and y so question is e vector is given acha each side of the cube is l it is mentioned each side is l bas each side is l okay so e vector it is mentioned e vector is equal to ax plus b I cap so it is asking find net flux and enclosed charge find net flux and enclosed charge yes अच्छा e vector I cap direction अच्छी means total electric field is present along positive x axis along positive x axis तुम इलेक्ट्रिक फील्ड गिवेन अच्छी यहाँ क्वेश्चन तुमको गिवेन देदेला
दैट मीन्स आम जो फ्लक्स कैलकुलेट करवा नेट फ्लक्स कैलकुलेट कले तो बर्तमान भलसे ऑब्जर्व कर यहीटा को आम कोऑर्डिनेट एक्सिस रे जब आम रिप्रेजेंट करवा दिस येलो कलर पॉइंट कोऑर्डिनेट केते हम 0,0,0 यस एंड तुमरो इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन अच्छी एलोंग एक्स एक्सिस दैट मीन्स आउट ऑफ 6 फेसेस इन द क्यूब दुईटा फेस रे हमर कोन हो फ्लक्स बाहर वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 दिस इज दिस फेसेस आर वन इज योर ब्लू कलर फेस अनदर वन इज रेड कलर फेस ये दुईटा फेस रे ही फ्लक्स हमें पाइबा अदर फेसेस रे कोन पाइबानी वो बिकॉज अदर फेसेस टेंजेंशियली क्रॉस करी गला ना सो फ्लक्स 0 हैला सो बर्तमान हमें फ्लक्स थ्रो लेफ्ट साइड बाहर करिवे फ्लक्स थ्रो राइट साइड बाहर करिवे क्लियर यस सो बर्तमान देखो सॉरी बस आंसर सो फाइव थ्रो लेफ्ट साइड फ्लक्स केमती हो एरिया वेक्टर आउटर नॉर्मल दिस इज योर एरिया वेक्टर ए वेक्टर एंड दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर सो आंसर विल बी फॉर थ्रो लेफ्ट साइड इज यस केते हो माइन सॉरी ई ए cos 180 डिग्री cos 180 minus 1 so minus e into a so e ର value କେତେ ଅଛି e is equal to ax plus b the magnitude be careful ax plus b yes x कौन x is the location of the face with respect to origin yes तो माने हम लिखिबा माइनस e जगह हम लिखिबा a into x ର लोकेशन केते 0 origin नहीं तमरो फर्स्ट फेसटा अछि ना लेफ्ट साइड फेसटा a into 0 plus b बुझेला yes I hope it is clear to all of you ax e वैल्यू हम लिखले ax plus b into area केते l square so this is minus bl square then हमें फाइंड करिया फ्लक्स थ्रो राइट साइड पे हमरो दिस इज द एरिया वेक्टर एंड दिस इज आल्सो द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर e वेक्टर एठी हमर आंसर आछो e a cos 0 is 1 this is e a e वैल्यू एठी केतना हो ax plus b so a into bas x means location of the red color face with respect to origin केते डिस्टेंस अछि l distance so al plus b into area हला l square रेडी तो आंसर इला केते हमरो al cube plus bl square क्लियर सो हमें बाहर करिया बर्तमान नेट फ्लक्स phi net is equal to phi left side plus phi right side so that will be equal to minus bl square plus al cube plus bl square minus bl square कैंसिल हैला आ रहला हमर केते al cube ताले हमर बाहरला phi net is equal to केते al cube phi net is equal to al cube but phi net is equals to q enclosed divided by epsilon naught is equal to al cube so q enclosed value हम इजीली कैलकुलेट कर परबा q in और q enclosed is al cube into epsilon naught al cube epsilon naught is your phi enclosed bas I hope this question is clear to all of you question number 17 finished then हम ଗୋଟେ concept बर्तमान स्टडी करिवा solid angle concept ता थोड़ा देखो ता अंडर केंदे लेवल क्वेश्चन हमें सॉल्व करिवा solid angle so हम पढ़ी जे plane angle solid angle to supplementary fundamental quantity yes first year first chapter that is unit dimension measurement that is chapter number 2 physical world for chapter number 1 deleted syllabus पर हमें unit dimension measurement को हम first chapter बोले assume करिया ओके तो solid angle केमती रिप्रेजेंट करा जाय ओमेगा डिनोटेड बाय ओमेगा तो कौन से solid angle टा सेटा देखिया पड़ियो यस सपोज एटा होले स्फीयर लेट अस कंसीडर इट इज स्फीयर ए स्फीयर मु कोन करली गोटे कट आउट एरिया नेली एटा गोटे स्फीयर मु गोटे एरिया बर्तन कंसीडर कली दिस इज एन एरिया ओके बस एटा तुम सेंटर ऑफ द स्फीयर कट आउट एरियाटा ए सेंटर ऑफ द स्फीयर सहित जो 3D एंगलटा तैयारी कला ना 3D एंगल ड्रॉ कला देखो आ टिके स्मॉल एंगल नबा दिस इज द कट आउट एरिया सपोज दिस इज सेंटर ऑफ स्फीयर ए कट आउट एरिया जो 3D एंगल बर्तमान फॉर्मेशन करुच्ची दिस 3D एंगल एटा कमे कहूचे सॉलिड एंगल डी ओमेगा दिस कट आउट एरिया वैल्यू इज डीए दिस वैल्यू इज डीए एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर सेंटर ऑफ द स्फीयर इज जो सो सीधा कथा ला गोटे कोन आइसक्रीम जदि हम एज्यूम करिया कोन आइसक्रीम हम खाइचे कोन आइसक्रीम रे बस
आमको लगुच कौन ये फेसटा गोटे कट आउट एरिया ऑफ ए स्फीयर बिग स्फीयर so this area let it be dA this is radius of that sphere and this angle 3D angle is your d omega solid angle तो solid angle formula कौन d omega is equals to dA by r square dA by r square clear यार यूनिट कौन स्टे रेडियन दैट यूनिट इज स्टे रेडियन फर्स्ट ईयर कॉन्सेप्ट में पढ़ी सो d omega यूनिट इज स्टे रेडियन symbol is SR yes okay ताले हम कौन देखिले angle subtended by the cut out area of a sphere with respect to center of the sphere that is your solid angle no need to write the definition बस आमे बर्तन पढ़िया कौन relation between solid angle and plane angle so solid angle गोटे 3D concept मन रखी था because it is under 3-dimensional figure plane angle related to 2D concept 2-dimensional figure clear तो बर्तन आमे पढ़िया relation between solid angle and plane angle relation between यार प्रूफ अच्छे आमर कि प्रूफ मुझे लिखुनी जस्ट खाली तुमको हिंट्स दे दूसरी रिलेशन रो फॉर्मूला सो रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल yes बस so this is suppose that figure this is the radius and this angle is suppose theta yes and this one is your omega suppose yes so relation is omega is equals to 2 pi into 1 minus cos theta this is the relation between solid angle and plane angle omega is solid angle and theta is your plane angle you have to remember this thing so keep it in mind relation between plane angle and solid angle yes तो बर्तमान आम कौन कह चाहूँ देख सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल ताले आम जब बाहर करवा क्वेश्चन है तुम कौन क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल दैट मीन्स आमको फाइंड कर डी ओमेगा टू बी मैक्सिमम सो फॉर डी ओमेगा टू बी मैक्सिमम फॉर्मूला कौन डी ओमेगा डी बाई आर स्क्वायर सो डी ए टू बी मैक्सिमम हम एरिया कौन हम मैक्सिमम हम सो मैक्सिमम एरिया के मैक्सिमम सरफेस एरिया मैक्सिमम एरिया ऑफ द कट आउट पार्ट मीन्स दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू मीन्स इट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर सो इट्स वैल्यू इज 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर ताले बर्तमान आम डी ओमेगा इज इक्वल टू के डी ए बाई आर स्क्वायर में जानते डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए बाई आर स्क्वायर सो डी ओमेगा मैक्स इज इक्वल्स टू सीधा आम लिखा डी ए मैक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर डी ए मैक्स मीन्स दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया डिवाइड बाई आर स्क्वायर तो कैनसल होगा आम बाहर लगे सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी ओमेगा इज 4 पाई सो डी ओमेगार मैक्सिमम वैल्यू इज के 4 पाई जिन आम जानले इन केस ऑफ ए सर्कल बिगेस्ट आर्क कोटा टोटल तार सर्कमफरेन्स यस तो केते एंगल कर विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर 360 डिग्री बस एक्जाक्टली ये विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्लेन एंगल के 360 डिग्री सेमती मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल विल बी द आंसर इज 4 पाई स्टे रेडियन ओके एटा के 2 पाई रेडियन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्लेन एंगल 2 पाई रेडियन एटा 4 पाई स्टे रेडियन आई होप इट इज क्लियर बस अच्छा अरे क्लियर नेक्स्ट देखो 2 पाई इंटू कॉस थीटा या को आम अल्टरनेटिवली केमती लिखिपर कॉस थीटा को आम इजिली कैलकुलेट कर ना कॉस थीटा वैल्यू एमती किसी प्रोब्लेम कर देखो ये जो ट्रायंगल देखुचे आम कॉस थीटा वैल्यू आम इजिली कैलकुलेट कर इन दिस ट्रायंगल तो कौन थीटार अटैच साइडटा के रेडियस आर सॉरी लेट दिस वैल्यू इज एक्स यस रेडियस इज आर so this will be r square plus x square root over so from figure what is the value of cos theta is equal to x divided by r square plus x square root over this is the value of cos theta as for the figure cos theta value is x divided by r square plus
एक्स स्क्वायर यस ओके सो बर्तमान आम देखा के फ्लक्स के वैल्यू ऑफ फ्लक्स सॉलिड एंगल पे फ्लक्स के ओके लिसन इट प्रॉपर्ली के इजीली आम कैलकुलेट कर परिबा यस सपोज दिस इज योर स्फीयर दिस इज सपोज आवर स्फीयर सी इट प्रॉपर्ली बर्तमान स्फीयर रु मु कौन नेली दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर बस I hope the figure is clear to all of you. Yes, and this is your x. So as per our diagram, this radius is r and charge q it is. Okay, देखो सो बर्तमान तुमको कहगला आम बर्तमान कनसेप्ट कौन जान ना आम बर्तमान पढ़े कौन देख फ्लक्स थ्रू द डिस्क यस आम हेडिंग दबा फ्लक्स थ्रू डिस्क डिस्क किए ए ब्लू कलर जगह मुझे शेडिंग करके देखा से तुम डिस्क दिस इज द डिस्क ए डिस्क टाइप लगुच कौन ए डिस्क एरियाटा गोटे कट आउट एरिया ऑफ ए स्फीयर ए डिस्क एरिया कट आउट एरिया ऑफ ए स्फीयर बर्तमान या आजिम कर कौन कले गोटे सिस्टम तैयारी कले सिस्टमटा क्या भाया फिल कले आम स्फीयर भाई ताले बर्तमान जस्ट इमेजिन ये केते स्टेराडियन क्रिएट करुच्ची ओमेगा केते वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल ओमेगा बस सो जदि आम कनसीडर करिया गोटे होल स्फीयर बर्तमान कौन हम जो क्वेश्चन बर्तमान क्यू चार्ज गिवेन अच्छी जो लोकेशन में क्यू चार्ज अच्छी फॉर द होल स्फीयर क्यूटा कौन हो एनक्लोज्ड चार्ज सो बर्तमान मुझे सिंपल लाइन लिखुची सॉलिड एंगल आ राइट साइड आम लिखा फ्लक्स सो जो सॉलिड एंगल बर्तमान 4 पाई स्टेराडियन थी सॉलिड एंगल 4 पाई स्टेराडियन मीन्स इट डील्स विथ ए स्फीयर बर्तमान चार्ज क्यू कौन एनक्लोज्ड चार्ज so the enclosed charge लाने फ्लक्स के q by epsilon naught that means हम कह पाइबा for solid angle 4 pi flux value is q by epsilon naught so for solid angle 1 steradian flux के q by 4 pi epsilon naught q by 4 pi epsilon naught clear so for solid angle omega steradian flux के q by 4 pi epsilon naught into omega अच्छा ओमेगा वैल्यू में जानी q डिवाइड बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा सो q डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ये थीटा किए देखो फिगर रे दिस एंगल इज आवर थीटा कॉस थीटा हम वैल्यू बाहर करते जस्ट कॉस थीटा इक्वल x डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर ये बहादुरी है कौन कनसेप्ट ठीक से बुझ 2 पाई कैनसल 2 रहा सो आंसर आसला q डिवाइडेड बाय 2 इप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स क्लियर यहाँ फ्लक्स थ्रू द डिस्क ये इजिली बाहर देख सो फ्लक्स थ्रू द डिस्क व्हाट इज एक्स व्हाट इज आर से पार्टा तुमको ध्यान रखा पड़ो सो फ्लक्स थ्रू द डिस्क इजिली आम फर्मुला एक्सट्राक्ट कले बाय यूजिंग सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट अदर मेथड भी हो पार रिंग स्ट्रक्चर कैलकुलेट करके इंटीग्रेशन मेथड यूज करें बाहर कर सेम फर्मुला ओके सो किसी दरकार ना से डेरिवेशन बर्तमान तुम या तुम प्रैक्टिस कर ठीक से सो बर्तमान क्वेश्चन कौन है लास्ट क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन आम था क्वेश्चन नंबर 17 ओके देन आम क्वेश्चन नंबर 18 को जा देख क्वेश्चन नंबर 18 कौन देला ये डिस्क अच्छे इट इज ए डिस्क इज गिवेन yes disk is given your radius देजी capital R radius of the disk is capital R yes so at a distance 3R
root 3r no, at a distance root 3r a charge q is present. Could charge q is present at a distance root 3r. So question is find flux through the disk. Find flux through the disk. This is our question. So find देखो phi is equals to formula q divided by 2 epsilon naught into 1 minus x divided by r square plus x square root over. This is our formula. Flux through the disk. Phi through the disk. So q divided by 2 epsilon naught, simply we have to solve. How is karibar nahi into 1 minus x value is root 3r as per the figure divided by r square plus x value root 3r means तार whole square केता होबो 3r square then root over. Yes, यार root over नेला माने केता आसले हमरो 4r square root over ना. So 4r square root over is 2r. So q by 2 epsilon naught into 1 minus root 3r divided by 2r. r cancel होला पर हमर रहला केते q divided by 2 epsilon naught 1 minus root 3 by 2. 1 minus root 3 by 2 means q divided by 2 epsilon naught. ये गला हमर केते 2 minus root 3 divided by 2. So final answer is q into 2 minus root 3 divided by 4 epsilon naught. This is your answer. So this is the value of the flux through the disk. I hope this value is clear to all of you. एटा फ्लक्स थ्रू द डिस्क केमती कैलकुलेट करा होगा. तो जेकोसी क्वेश्चन दिया है तुमको से अनुसार तुम कैलकुलेट कर. यस ओके. सो आई होप रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स आम सब भेराइटर क्वेश्चन बर्तमान सल्व कले. क्यूब्र डिफरेंट केसेस ओके कोड चार्ज रही पार कर्नर रही पार बॉडी सेंटर फेस सेंटर ये सब रही पार आम सल्व कले ठीक से. यस बर्तमान तुम ड्यूटी अगेन तुम लेक्चर को ठीक से शुण प्रैक्टिस करो पेपर वर्क करो ठीक से. ओके बहुत सारा क्वेश्चन या रिलेटेड तुम सल्व करो सो दैट किसी गोटे एक्सपांशन आसो माइंड रे. यस सो जो तुम वीडियोटा भावुच हेल्पफुल हम सब पिला सो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.